हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर पार्ट 2 वीडियो फॉर आवर रिपीटर स्टूडेंट्स। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था रिगार्डिंग आपका रिविजन स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, एंड वी आर ऑल्सो डिस्कस्ड अ डे बाय डे शेड्यूल ऑफ द टॉपिक्स एंड कितना टाइम क्या देना चाहिए फॉर योर रिविजन एंड एक्स्ट्रा डेज एंड ऑल दैट. So now in this video we'll be discussing regarding the second part of your preparation. The second part of your preparation basically consists of mock papers. It is quite similar to the strategy video for the running your students also, लेकिन for repeater students थोड़ा सा difference है, which is why we have taken the trouble to make a separate video for you all. So please go through this video to understand कि आपको क्या करना है in these crucial 3 months. So first month आपने दे दिया आपका revision करने में in all the topics, and the next 2 months you must solve mock papers. So these mock papers must be in the same pattern as the NEET exam which will be held in 2023, and frequency must be every day. मतलब आपको रोज़ एक mock paper करना है. Now fear not, I will explain both these points in total detail so that आपको समझने में कोई problem नहीं हो. So the first point कि आपको same pattern में करना है in the mock papers. So the only question which can arise in this point is that what is the pattern. So for that we have to discuss the pattern of the NEET paper. So in 2022 year से NEET का एक नया pattern आया है, and the pattern is right on your screens. If you just go through it, you will understand very easily what the pattern is. So there are 4 subjects: physics, chemistry, botany and zoology. Biology has been divided into botany and zoology. So each of these 4 subjects will have 2 sections, section A and section B. Section A will have 35 compulsory questions which you have to attempt, and section B will have 15 questions, out of which आपको 10 questions करने हैं. So there will be 180 marks for each segment, and total 180 into 4 will give you 720 marks. The total paper is 720 marks. So the total time is 3 hours and 20 minutes, which corresponds to 200 minutes. Which is basically 200 questions and 200 minutes ऐसे करके दिया हुआ है. And every correct answer that you mark will be given a +4, and every incorrect option which you mark will be given a -1. अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो फिर आपके उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. So that is the pattern of the paper, and that is the pattern of mock test that you should be given in your preparation days as well. So just take this in. Now coming to the second thing is that when I said कि आपका frequency every day रहना चाहिए, so many of you might be thinking ये बहुत ज़्यादा frequency है, बिल्कुल time नहीं मिलेगा करने में. So I am here to clarify your doubts regarding why it's necessary. So आपका 2 महीना का जो time है, you have to solve a mock paper every single day for 3 hours and 20 minutes. So when you are in the last 2 months of your preparation for NEET, you should be giving around 12 hours a day for your studies to NEET, and do not be overwhelmed with this number. I am not exaggerating. आपके एक करियर मेकिंग एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले से आपको 12 घंटे दिन में तो देना ही है. आई नो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन देर इज़ नो गेन विदाउट एनी पेन, एंड सो आपको थोड़ा ये टाइम देना ही पड़ेगा. सो अगर आप 12 घंटे देते हो इन अ डे विच यू मस्ट, उसमें से आपको 3 hours 20 minutes देना है फॉर सॉल्विंग द पेपर, योर मॉक पेपर. सो दैट मीन्स आपका 8 hours and 40 minutes अभी भी है हाथ में फॉर एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ द पेपर्स, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली ऑफ गिविंग अ मॉक पेपर. सो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया है so that it is easier for you to just understand. So I have listed down the 7 days of the week, which is denoted by Monday M, Tuesday T, ऐसे करके Monday से Sunday तक दिया हुआ है. And I have divided the day into 2 parts, one for paper and one for analysis. So the paper will be for 3 hours and 20 minutes, and analysis होगा for 9 hours and for 8 hours and 40 minutes. सो ना आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन क्या मतलब है एनालिसिस का, कैसे पेपर देना है, ये सब भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. डू नॉट वरी अबाउट दैट. आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको कितना टाइम देना है टू बी एबल टू प्रिपेयर प्रॉपरली. Okay, so now first thing is regarding the paper. When you give your mock papers, you have to take these papers very very seriously, because अगर आपके पूरे नीट के प्रिपरेशन का कोई make or break point है, then it is this. You know, every biochemical reaction in your body has a critical step जिसके basis पे rate
डिसाइड होता है किसी भी रिएक्शन का, कंसिडर मॉक टेस्ट एज दैट रेट लिमिटिंग क्रिटिकल स्टेप इन योर नीट प्रिपरेशन. ऑलराइट, सो इन्वायरमेंट एकदम सेम होना चाहिए एज योर ओरिजिनल नीट एग्जाम. सो कैसा होना चाहिए? You should purchase OMR sheets. Please purchase set of 25-30 OMR sheets because you'll be giving around, you'll buy 2 of those. So OMR sheets में आपको bubble करना है. You can keep 1 to 2 white sheets beside you for rough work and calculation. लेकिन do not get a habit of this. पहले एक maximum first week you can keep 1 to 2 white sheets, because in the main exam you will be not getting any white sheets. You have to do all your rough work and calculation on the question paper itself. So आपको ऐसे कोई sheets नहीं दिए जाएंगे. So it's advisable that you don't get a habit of it. लेकिन अगर आप mock test में used to नहीं हो देने के लिए and you are just starting to give the mock test, then you may require this. So just for the first week you can keep a couple of sheets, 1 sheet, उससे ज़्यादा नहीं. बट इवेंचुअली आपको आदत डालनी है विदाउट एनी वाइट शीट टू बी एबल टू डू एवरीथिंग. वैसे बायो में तो यू डोंट नीड एनी कैलकुलेशन, बस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में. सो फॉर दैट यू नीड टू डू इट ऑन द पेपर इटसेल्फ. Keep one ballpoint pen, black or blue, which you will use to do your calculation, and bubble the OMR sheets. Remove all other objects from your study space. You should not have any calculator because it's not allowed in the NEET exam, and no electronic devices. Smartphone तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन साथ ही साथ कोई स्मार्ट वॉच या फिर ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके सामने नहीं रहना चाहिए. So, and you must mention to your family not to disturb you for these coming 3 hours and 20 minutes. मतलब आपको ये एग्ज़ाम बिल्कुल सीरियसली लेना है. ऐसा नहीं कि घर में बैठे हो so you can have a little chat with your family members, take a snack, all this. ये सब नहीं करना है. एकदम जैसे एग्ज़ाम आप देने वाले हो नीट में वैसे ही देना है. So that because एक एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए it's not just the subject matter which matters. It is also how well accustomed you are to the environment of the exam, so that आप में पैनिक या टेंशन का कोई एलिमेंट ना रहे. उसी को एलिमिनेट करने के लिए I am asking you to simulate the exact environment. And one more thing which I would ask you to do is that please get used to in a fan room. Do not get used to an air conditioned room, because chances are your NEET exam center will not have an air conditioner. So do not turn on the AC when you're solving these mock tests, because इससे आपके एक आदत हो जा सकती है which will be detrimental on the day of the exam. So use a fan and not an AC. Okay, so that is your details regarding आपको पेपर कैसे देना है and how to set up your study space to be able to give the exam. The next element, for 8 hours and 40 minutes you have to do the review and analysis of the questions which you got wrong in the paper, as well as the questions which you guessed and got correct. मतलब से यू हैव जस्ट ऐसे ही गेस करके कुछ करेक्ट हो गया, डोंट थिंक दैट वो तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बिकॉज इट्स नॉट, फॉर द सिंपल रीजन यू हैव गेस्ड इट. So you have to solidify the understanding of the guessed questions as well as the mistakes you made. So what do I mean by review and analysis? You have to read the solutions and साथ ही साथ उसका उन questions का relevant theory आपको पढ़ना है. So कहाँ से relevant theory पढ़ना है? So this is similar to what I told you in the previous video also, कि किधर जहाँ पर इधर से revision करने वाले हो for the respective topics, उधर ही से आपको relevant theory पढ़ना है. So for bio and inorganic chemistry purely NCERT follow करना है, और कोई books, कोई notes, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, because this is purely what comes for bio and inorganic chemistry. Now for organic chemistry, as you have to use your NCERT with your notes as and when required. Like अगर कोई named reaction रहता है, popular famous जो reactions है, those you can use NCERT for, या फिर for some tables or for some data etc. that you have to refer to NCERT. लेकिन अगर कोई conceptual question आ जाता है, then you can refer to the notes. For example, the mechanism of reaction or anything like that, then you can refer to the notes. But other than that, for all other data, use NCERT. Now for physics and physical chemistry, which mostly just involves your calculations and concept, उसके लिए पहला तो आपको formula revise करना है. So if you have followed my advice which I gave you in the initial videos, if you have maintained a formula copy, then this will be very easy for you. If not, you have to go back and review the formula of the chapter in concern. उसके साथ यू कैन डू नोट्स एंड प्लस माइनस NCERT एज रिक्वायर्ड. वो आपको समझना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन विच यू गॉट रॉन्ग और यू हैव गेस्ड एंड गॉट करेक्ट. सो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा. बट दिस इज़ ओवरऑल द सोर्सेज विच यू हैव टू यूज़ टू रिव्यू द रेलिवेंट थ्योरी. So I think most of you have understood that reviewing your papers is the most important thing when you're solving your mock papers. So do not be discouraged by lower scores in the initial papers, because ऐसा होने वाला है.
review your mistakes diligently and your scores will increase automatically. And just as a pointer कि अगर आपके last 5 से 7 papers में 600 plus आ रहा है, then it's a good sign that you will be clearing NEET. So that's it for today, students. Thank you. I've tried to give you all the relevant information for your mock test solving activity in a concise video. Keep studying and good luck.